everybody. Hope you all are doing fine. और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And happy winters. I really love winters, so I'm happy. ये मेरा booster पीछे खेल रहा है. So okay. So today, we'll be talking about how to know who's the right person for you. So talking about all the couples and marriages, ये सारा कुछ relationship issues. So this question just came up. Everybody has this in the mind, okay, how to know who's the one for you. So first of all, is it a right question? There'll be many people who will be like, "भी इन्नी perfect चीज़ लब के करना की है." Your parents and earlier generation, they'll be like, "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ कुछ सोचा ही नहीं सी और बड़ी अच्छी साड़ी marriages निकल गया है ना." और आई थिंक प्रेजेंट जनरेशन एट टाइम्स फील के नहीं कोई गल नहीं मे बी अरेंज मैरिज होएगी दैट प्रेशर विल नॉट बी देयर एंड वील जस्ट एडजस्ट एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन एंड वील गो ऑन विद इट सो देर आर टू सॉर्ट्स ऑफ माइंड सेट्स हियर ओके सो इज इट अ राइट क्वेश्चन ये पहली चीज़ डू आई even need that right one. Now here is the thing which is like one big deciding factor. Why don't you need that right one? When you go for for your cars, for whatever, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਯੂ ਗੋ ਫॉर द बेस्ट थिंग ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ इफ़ यू वॉन्ट कि दी लाइफ इंक्रीज होए इस चीज़ की तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना सो वैन यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दोज थिंग्स वाई डू यू थिंक दैट सच कॉम्प्रोमाइजेज शुड बी देयर इन द रिलेशनशिप्स अच्छा फिर देन देर इज़ अनदर थिंग टू इट कि सारे कहते हैं कि यू इवॉल्व थ्रू योर प्रॉब्लम्स इफ़ यू आर विद सच डिफिकल्ट पीपल अराउंड यू इवॉल्व आउट ऑफ इट बट देन आई हैव टू से कि इवॉल्व होने के होर बहुत सारे तरीके ने वाई वेस्ट योर एनर्जीज बीइंग विद द पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू सो प्लीज़ थिंक अबाउट ऑल दिस सो अच्छा थर्ड पॉइंट है हाँ जी सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टू बी पॉजिटिव इज़ वॉट वी आर थॉट दैट्स द थॉट प्रोसेस मतलब कहते पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए एंड बीइंग पॉजिटिव वी टेंड टू कीप ऑन एडजस्टिंग to whatever is not even suiting us at times. So, demarcation should be there. Being positive is good, but that demarcation should be there that you are respected, that your thought process is respected. उससे compromise ना होए मतलब. If you are compromising on that also, then that positive set of mind will not take you a very long way. So just these three questions, is it a right question? Do I even need that right one? And to be positive is what we are taught, and how positive, that is one thing which is really, really important. Okay, so then it is right one है किड़ा है मतलब right one the characteristics की होंगे. So the right one will show up when you will know that this person is letting me be me. Who lets you be you first. Second, who hears even what you don't say. That's some sort of communication. वो बहुत ज़रूरी है. Communication बहुत टाइप दी होंदी है, बोल के होंदी है, body language होंदी है, telepathy होंदी है. It's so many things to it. A person who can just understand your silence matters a lot. Third, who makes you do what scares the hell out of you and gives you the strength to face it head on like a rock solid support. So we grow when we face our challenges. So this person should actually help you face all that and help you grow in those conditions. So this person makes you do what really scares you and he is like a rock solid support there for you. Fourth, who brings out the best in you. So our behaviors should be at the optimum
whichever situation we are in. ਸੋ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਆਰ ਟੈਂਪਰ, we can say abusive things, we can just start giving up. So this person should make sure that he gets the best out of you. So fifth, who's showing you his true self no matter how raw or unfinished. Transparency बहुत बहुत ज़रूरी है ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ. No, you both should be equally vulnerable. You both should know your highest and the lowest points. You should know your strengths and weaknesses through and through, right? So, okay, sixth is who's ready to build dreams together with you and not just let life pass by. ये बहुत ज़रूरी है. ये ਜਿਹੜੇ ड्रीम्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are like that fresh breath of air. बहुत ज़रूरी है to grow in life, and you both should share those dreams to move on out of anything together in life, to grow together. So this is required. Okay, seventh, who loves you enough to see more of you mentally, emotionally and physically. थोड़े तो मतलब वो तंग नहीं रहना चाहिए, मतलब mentally भी he is readily available there, emotionally also ready to accept your highs and lows, and physically also that person wants to be around you. These three factors are the must. That a person should love you enough to see more of you. More of you includes having kids also. That is having more of both of you, definitely. Okay, so eighth is who takes decisions keeping you in mind. मतलब when you are a couple, थोड़े decisions ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ decide ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ. So your decision making should be together. You should be a part of it. Ninth, whose life goals bring you both closer, or he brings you so close that your living life to the fullest is your goal. So either your life goals should be bringing you both together, या तुसी लाइफ ही इन्नी प्यारी जी लो कि वही थोड़ा गोल बन जाए. ये सोच लो, आराम ना सोच के देख लो. Okay, 10th, who trusts you and loves you just a tad bit more to let you go and then have faith and trust to wait and let you get back, then maybe thrash you even if required. So मतलब पहले इन्ना trust करे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਏ if you are wanting to go. ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ if you need to be like sorted nice and proper, that is also required, should not be missed. A give and take hai. You can't take the other person for granted. You should be very strong in love that you have that strength to wait for that person, but then you have to be true, absolutely true. Okay, 11th, who can think of celebrating each day with you right from morning till night, opening and closing of the day with you. मतलब ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है. And to be sure that you will not get bored by this person. कुछ तो कर ही लेंगे टाइप्स. मतलब इस बंदे के नाल तुम्हें ऐसा लगे कि आहा आई एम स्पेंडिंग द डे विद दिस पर्सन, दैट्स लाइक माई टाइप ऑफ डे. बहुत ज़रूरी है. मतलब टेंशन ना हो जाए कि ओ शिट ਇਹਦੀ शक्ल देखनी पैनी है, हाउ डू आई मैनेज थिंग्स. नो, you both should enjoy each other's company. And the starting of the day and the ending of the day has to be with your significant other. That's like one golden rule. So all these things, I just wanted to share them. I really think they make a lot of difference, and I hope that you are able to maybe scan ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ. All the best, Ruhana this side. I follow my Ru. Are you doing that? Lots of love.